A very warm good morning to all of you. On behalf of GS Public School, Dongcha, today we are going to start a session related to enhanced training. And the topic for today is teaching strategies in mathematics. And for that, our dedicated research person is Mr. Neeraj Singh, STNC, GS Public School, PGT. He will be elaborating the teaching strategies, the pedagogy, the methods, the scenarios of implementing the mathematics in an efficient manner, how to implement, how to evaluate, what would be the learning outcomes. So, all these things would be very elaborately briefed by our dedicated resource person, Mr. Neeraj Kumar Singh, sir. In this topic, he will be describing or briefing the techniques, the method, the implementations, the outcomes, and the areas in mathematics where we are in need to focus, where we need to have a patience, where we will get the outcomes. So all these things would be related to mathematics. How a weaker student or weaker teacher can over-relate related to the mathematics. So all in this session, the whole things would be briefed by our research person, Mr. Nitish sir. Nitish sir, please have a appreciation. Please give a round of applause for Mr. Nitish sir. Welcome, Nitish sir. Thank you, Sony sir. You have called me for the today's training session, and I am the RP of this training session. And thank to the GS Public School who has provided me such a opportunity to tell about teaching strategies in mathematics. Most of the time, we see that or we can take a survey that you randomly ask the question toward the student, which subject you have find difficult. Then the answer is quickly they remind and they tell, math is so hard sir, so I don't like to math because whatever I study, I am not able to solve the question, I am forgetting all the formulas, whatever the methodology, what are the process to solving the math, I can't understand. They have such a different level of fear about maths. They think that whatever and how much I will study math, I can't be able to solve the questions. And it will be not helpful to score good marks in mathematics. So, for that reason, what will be happen in the result? We see that after matriculation, most of the students drop the math subject. They just go for arts, commerce. They don't want to take science. Why? Because they have lots of fear and their a mindset, I am not in good in math. They think about that, if I will go for the math, then what are the uses of math in our life? There is no use of algebra, there is no use of vector, there is no use of trigonometric formula in our life. No uses of calculus formulas, where will we use?
At first, if we not able to make understand our student where the math is applicable, then they will not understand the value of the subject. They will not understand the value of the subject. For that reason, they are trying to leave such type of important subject. I can make you understand that if math is not in the universe will not exist. A baby who take born, the before born, the math is started because doctor are going to predict when he will born. They in ultrasound they take the coordinate geometry and the size and shape. According to that, they discuss and tell that what is the weight when he or she will born. In astrology, we can see that math is most important. Suppose you are going to start a new venture or business, you go for the pandit and ask which date is suitable, which is the most suitable date to open my venture, to grow my business successfully in my life. According to the birth, all their astrology, we can say the kundali dependent on that. Whatever your child will do, whatever he will be in the life. So all these things will be happen by math. In medical science, we can see that suppose if the reading of the blood pressure is, we know that the average blood pressure is 120 by 80. Suppose some reading will be exceed, then what will the doctor start? They start to give you medicine. In lipid profile also, there are sometimes some fatty people having the lipid profile, their cholesterol level will be increased or decreased. Then the doctor also takes some types of, we can say, investigation about your lipid profile and they calculate the HDL, LDL also. For that, they giving or suggesting the medicine. All those things, we never know that our body is also working on the function of math. Suppose if you think you just want to examine by ear itself, you can see there is nose, there one hole is having the brain is high according to the next. What is happening? After 40 minutes, again, faster whatever the air you are breathing by one nose, you see that the next nose starting the more breathing than the first one. All the body also working on the maths. So, first we understand what is math. And there are lots of questions in their teacher also and the student. मैथ कैसे सीखे, मैथ को कैसे समझे, मैथ सॉल्व करने का क्या तरीका है. तो at first I will tell you that math is just like a language. Other subjects just Hindi, English. Math is also the language. You can, I am reading the number language, all about the number language. Most of the time, people think that I am not able to understand. So, if you want to understand the math, and from beginning, in your home, your mother, father, grandfather, grandmother also teach you math in your daily life. Suppose they have given some types of work to bring from the shop. They tell that you take 20 rupees, you bring this one,
this one, and you also take 2 rupees to eat some chocolates or something else. But when the level of level of the classes increase, what will be happen? The student start the subject math learn, not understand. They just start learning. And it is the first thing they committing mistakes. We can say अंक विज्ञान, वास्तव में गणित एक अंक विज्ञान है। ज्ञान की वह शाखा जो संख्याओं के मनोगत भाव से संबंधित है, पर आधारित होते हैं, जिसे हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसे सभी मूल चीज को सीखते हैं। One day I am sitting in my office and one teacher has told me that, sir, you will tell me where we use the formula A plus B ka whole square in our daily life. So I have just replied, each and every action, whatever you are doing, you are using algebra. Suppose a man who is working for their business and they think about that, I have to be millionaire. Then he think about whatever the capital he has. Suppose I have little capital, then I want to be millionaire, it will be happen. If you know about the math and the calculation of math, you will definitely be a millionaire. Suppose you want to be millionaire. Suppose you do 1 rupees profit business, then what will be happen? You have to decide, I have to sell my product to the 1 crore person. And each 1 rupees will be added and the sum will be what happened? Became a crore. Suppose some person having a high level of capital, he has started 10 rupees profitable business, he have to sell 10 lakhs people. Suppose some more having the capital, starting the 100 rupees profitable business, he have to sell 1 lakh people. Yeah, or we can say, yes, 1 lakh people. Like this way, we can calculate all those things about the math, and whatever the route we select, we can move forward and we get success in our life also. So I am going to be start here. Next one. Why are effective math strategies so important for a student? Next slide. I have already discussed math is an essential life skill. You use problem solving. Solving every day, the math strategies you teach are neat, but many students have difficult time making the connection between life and math and life. I have already discussed about that. Math is always usable in our daily life. Suppose in algebra, I have a meeting. Next morning, I have a meeting. What I will do? I will set an alarm to get up early in the morning. I consider that I have to go for meeting on the time. So I have set the alarm. In between them, I have also calculated in our mind. I have to take this much time for bath. I have to take this much time for breakfast. I have to take this much time to go to my office. So what will be the result? The person became on the time. They are ready to go for meeting on the time, and he attend successfully. But
most important thing that like other subjects, we can't be start math at any end or middle of the chapter. Suppose if you don't know the addition, subtraction, division, then you will not able to find the board marks. Suppose you are not able to go for hard problem solving questions. Unlike other subjects, math built on itself, you can't successfully move forward without a strong understanding of previous material, and this makes math instruction difficult. It is for student also and teacher also. Suppose I am going to be teach something, suppose that congruence of triangle. Then what will be happen? I will not able to make understand that what are the congruence of triangle. The student just simply run after the questions. What are the congruence of triangle? They are still not understand. Congruence of triangle we have to make them understand by some figure also, by some demonstration also. The triangle who having the equal side and equal triangle, we can say the congruence of triangle. In congruence of triangle, lots of things, side angle, side. These types of things we have to make understand. If we think that I will directly go toward the questions, it will be not helpful for the student also and not even teacher. So now, next slide. Next slide. Algebra. Yes, algebra. Almost every student exclaims that I am never going to use this math in real life. While solving algebra equation, isn't it? Most of the students having the question, I am not using this algebraic equation in my life. However, this is not always the situation. We often see people using algebra in most aspects of daily life. यदि सिर्फ x, y अगर हमें दिखाई देता है तो भी हम समझते हैं कि अलजेब्रा का उपयोग हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलजेब्रा का उपयोग हम लोग अपने डेली लाइफ में प्रत्येक क्षण में करते हैं। For example, people in the market make use of algebraic operation to calculate profit and loss in a curve, just because we do not see any x and y. Does not mean that algebra has failed to prove its existence. Still, the real life examples of algebra are uncountable. These prices and consist mathematical language intertwines beautifully with almost all the subjects, even daily life. Suppose that algebra used by our earlier life, professional advancement. Suppose you are going to be in the intermediate or higher education, you will see the algebraic operations in physical, chemicals, and the computer science also. The algorithms are based on the algebraic operation only. Moreover, algebraic is involved in the field of art and architecture. In morning routine also I have already said, business, finance management, we can use the algebra. In cooking also we can use the algebra. Suppose a person who is not able to know to cook anything, what he or she do? She just refer to the recipe book and what the ingredient and how much the ingredient should be added. That suppose that I am not able to cook anything, want to make a cake. Then what happens? I just put some. If I know about anything, what will be happen? Sometimes sugar will be added more. Sometimes the rice will be added more. For that proper
the kheer, whatever the taste of kheer, it will be not come to us. Next slide. Trigonometry. Trigonometry is a very different subject than most of the math we encounter in our life previously, and it take a different way of thinking to understand. For that reason, many people just want to get over with the trees come up. Trigonometry can be used measure height or building or mountain. Trigonometry used in video games, in construction, in measuring field lots, areas, installing ceramic, group inclinations. Trigonometry also used in flight engineering. These are the use of this subject. If I will go for the teaching strategy, we have to know about that, because our students, they don't understand what are the uses of this thing, and they are having lack of interest to knowing the subject maths. For that I am telling all these things. So trigonometry is also used in marine biology, marine engineering. Trigonometry also used in navigation. While using the navigation, trigonometry formula are also applied. Suppose that trigonometry is used to set direction such as north, south, east, west. It tells you what direction to take with the compass to get on a straight direction. It is used in navigation in order to pinpoint a location. It is used to find the distance of the sun from a point in a sea. It is also used to see the horizon. So moving toward the next slide. Before I discuss the slide, I want to tell you some short stories. Suppose one day, hello. So story is very remarkable, or we can say, if we understand, then most of the problem we can solve. Once upon a time, the all classes are sitting together. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Then what will be happen? The class 9 has slept to the class 8. क्लास 9 जो है क्लास 8 को थप्पड़ मार दिया. Then class 8 has asked why you have beaten me. Then class 9 has replied, I am your senior, so I have just slapped you. Once again, the whole entire class sounding the slap. क्लास 8 को जब मारा तो क्लास 8 को जब जवाब मिला कि मैं तुम्हारा सीनियर हूं इसलिए तुम्हें मारा हूं, तो क्लास 8 ने भी क्लास 7 को मारा, क्लास 7 ने क्लास 6 को मारा थप्पड़, और इस तरह से होते हुए क्लास 2 तक को मार पड़ गई. अब क्लास 2 ने क्लास 1 को भी मार दिया. वही बगल में बैठा हुआ था क्लास 0. वो बेचारा जो थप्पड़ का जो बूम चल रहा था पूरे क्लास में, वो डरा सहमा सा बैठा हुआ था कि आप तो मुझे ही पढ़ने वाली है. तो उसने अपने गाल आगे किए, लेकिन क्लास 1 ने उसे थप्पड़ नहीं मारा. उसने कहा मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा. तो 0 ने कहा कि मैं तो यहाँ सबसे छोटा हूं, मुझे क्यों आप थप्पड़ नहीं मार रहे. तो 1 जो है ठीक 0 के बगल में जाके बैठ गया. अब 0 और 1 और 0 क्या हो गया? 10. जब आप किसी के जीवन से जुड़ जाए तो उसकी महत्ता अगर बढ़ जाए तो वही सबसे अधिक कामयाबी की चीज है. यदि हम मैथ की कैलकुलेशन को इसी तरह से समझ जाए कि मैथ हमारे जीवन में कितनी महत्व है, इसको हम लोग ना ही गिन सकते हैं ना ही आंक सकते हैं. और एक एक पग में जो हम लोग चेयर में बैठे हुए हैं वो भी
उसका भी स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है कि कितना वो भार सह सकता है। ये अगर हम मैथ्स को समझ जाए हर तरीके से, तो मैथ हमारे लिए जीवन में एक एक पल पर उपयोग होने वाला सब्जेक्ट। So moving toward the coordinate geometry, I have already given the example of this little baby. So coordinate geometry is used in, it is always better to understand how information benefit us in real world. Let's look how the coordinate geometry can be applied in practice. In GPS, in map, and variety of field, you use coordinate geometry also. Locating air transport. Coordinate geometry is used to manage and regulate air traffic. The coordinates of the flight are used to describe the air current location. Even if an aircraft moves a teeny distance up, down, or forward or backward, the system updates the coordinate of flight for every small change in position. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि कौन सा फ्लाइट किस डायरेक्शन से है, कितना आगे है या पीछे है या अप है या डाउन है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जीपीएस सिस्टम से सिग्नल भेजकर हम लोग वहां पर उनको डायरेक्ट करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ मैप, टेक्नोलॉजी, आर्ट, ये सभी चीजों में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Mensuration. Mensuration is the branch of mathematics that study the mensuration 2D or 3-dimensional figure on parameters like length, volume, surface area, etc. In other words, it is used to process of measurement based on algebraic equation. In cooking also, while we are bachelor in our life, we not able to make the rice in cooker. So my mother has taught me, when you put 1 glass of rice, you have to add 2 glass of water. When you add 1 glass of rice, you have to put 2 or add 2 glass of water, and you just close the cooker, and when the whistle will be ring at 2 times, you understand that your rice has ready. So each and every step we are using the mensuration also. Before leaving the door, and in winter season also, what happened? The government had announced that 3-day holiday for the junior student. Why? When the temperature of thermometer, it shows that the volume of density of the mercury will be increased or decreased due to the cold. So they think that the cold wave are going continuously, so they have given the holidays for 3 days. When planning a car journey, we make look at map to find out the quickest way. Where we going plan to go someplace, we just search in the mobile what are the shortest route of the locations. So we may look at how to cut down the number of miles we have to travel by taking shortcut. The speed you travel at can also be measured, and this way contribute to the length journey in the travel faster. कैलकुलस का उपयोग, नेक्स्ट स्लाइड। कैलकुलस का उपयोग हम लोग आर्किटेक्ट में करते हैं। जब एक कर्व सरफेस या कर्व एरिया जब हम लोग बनाते हैं, तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल कितने सारे हम लोग जोड़कर एक कर्व सरफेस हम लोग बना सकते हैं।
आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में इसका काफी उपयोग होता है। और हम लोग बोल सकते हैं कि मेडिकल साइंस में भी कैलकुलस का बहुत ही उपयोग होता है। सपोज दैट biologists use differential calculus to determine the exact rate of growth in the bacterial culture when different variables such as temperature and food source are changed. बैक्टीरिया का संख्या किस तरह से, जैसे कि इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे स्मॉलेस्ट स्मॉल पार्टिकल को जोड़कर एक समूह बनाना। और डिफरेंशिएशन को बोलते हैं बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट्स में असंख्य रूप में तोड़ना। तो बैक्टीरिया का ग्रोथ जो हमारे शरीर में होता है उसमें भी बायोलॉजिकल काउंट में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का उपयोग करते हैं। अभी तक तो स्टिल आई एम गोइंग टुवर्ड द व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैथ इन आवर लाइफ, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज वी हैव टू फॉलो। जस्ट few minutes I will start. Next, vector. Application of vector can be used by air traffic control where tracking planes by meteorologists when describing the condition and by computer programmer when they are designing virtual world. In this section, we will present 3 applications of vector that are commonly used in the study of physics, work, torque, or magnetic force. Daily life application of vector: navigation by air and by boat in generally use vector. आसमान और समुद्र के मार्ग में हम लोग वेक्टर का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। यदि हम वेक्टर का उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग समुद्र और हवाई जहाज के मार्ग में कहीं भी फंस सकते हैं और भटक सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि ये प्रिडिक्शन है। आप सपोज दैट ट्रेन का टिकट लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट है तो आप प्रिडिक्शन में जाते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था, ये टिकट कंफर्म हुआ था या नहीं हुआ था। Then you decide I have to go or not or cancel the ticket. Lots of uses. If I will tell the uses of the map, whole day will be finished. So now a probability in insurance also used. Suppose some having the different level of premium. Old age person having the high rate of premium. Some drunker having the high rate of premium because the risk level of death is high. ऐसा होता है ना कि उसका रिस्क लेवल है डेथ का ज्यादा है, इसलिए उसका प्रीमियम रेट हाई होगा। ये सब क्या है, प्रोबेबिलिटी के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। गेमिंग थ्योरी में, पॉलिटिक्स में, स्टाफ इन ग्रोसरी स्टोर, सपोज मैंने ग्रोसरी स्टोर खोला है और मेरा जो सेल है उसके अकॉर्डिंग हम स्टाफ रख रहे हैं कि ये मेरा सेल है, इसके अकॉर्डिंग कितना स्टाफ होना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी ही बताता है। ट्रैफिक सिग्नल में, ओके नेक्स्ट, so how is going? Wonderful session, sir. To succeed in math, the student need to do more than memorize formula or drill timetable. They need to develop a full understanding of what their math lesson means and how they translate into the real world. To reach that level of understanding, you need a variety of teaching strategies. We have to use variety of teaching strategies. We just not use just pen and pencil and paper. We have to use variety of teaching strategies. Suppose that we start the math race in our school. We have done such type of project. Some student has made Roman number by matchsticks. This is the way to teach the mathematics in easiest way and for longer time.
In one thing I also want to tell, my experience tells that whenever you are going to teach math, you have to follow what the chapter is saying. Whatever the content in the chapter, you have to teach them. What are the solved examples given in the chapter? You have to teach them. Then you go for the exercise. But most of the time, for completing syllabus, what we will do? Just we start the chapter and we want to just finish all the questions and all student will be just complete the notes book. That's it. What will be happening? It is not a subject of learning. It is subject of understanding. So I will tell that practice math by consistency basis. We have to practice continuously and try to make our student how they will engage into the math subject. Also read more and more mathematics subject. Revise, yeah, it will say that frequent revision will be applied. Frequent revision will be applied. For that, all the formulas and all the previous chapter things will be remembered for the student. Make formula chart of math. Most of us we mistake to make the formula chart of mathematics. Formula chart of mathematics is very important. If you making such type of things into the class, you see that the various changes into the student, they learn all the formula, and whenever the formula they learn are having in their mind, it is very easy to solve all the questions. Or we can say, formula are the life of math. फॉर्मूला ही मैथ के लिए उसका जीवन है. यदि फॉर्मूला नहीं आप याद रखेंगे या फॉर्मूला के बारे में नहीं जानेंगे तो मैथ बनाना संभव नहीं है. आप जोड़ घटाव गुणा भाग तक ही रह जाएंगे. Don't run or don't fear from maths. Most of the time we see that the student when not able to solve the question, just they leave the question and go forward to solve next question. It shows that you are not able to understand. In teacher case also, suppose you are solving the question, you solve and the answer mismatch, you just having the less confidence. How that can? What happened? Where I have done mistakes? Answer is some different. The student just start shouting, sir, answer is not matching. Then the teacher think that what will we do? So we have to learn all these things. Never run forward for hard questions. If you solve the question at a time or proceeding to the next question, before proceeding to the next question, definitely you will understand all the topics, all the questions of the related chapter. हम लोग अक्सर क्या करते हैं, मैथ का क्वेश्चन नहीं बना, छोड़ दिए, आगे चले गए. वो सबसे बड़ा गलती है. सबसे बड़ा गलती वही है. बच्चे में ये आदत डलाना ही नहीं चाहिए कि ये क्वेश्चन छोड़ के आगे चलेंगे. उनको उस पे ही अगर वो क्वेश्चन, अगर वो हार्ड क्वेश्चन सब बना लिए, मतलब वो मैथ के लिए, उस चैप्टर के लिए परफेक्ट हो गए. और जब हम लोग मैथ सब्जेक्ट खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं, तो हमें बच्चों से रिव्यू भी लेना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन तुमको डिफिकल्ट लगा, कहां से आप नहीं बना पाए. Study math or teach in group.
we study math, अक्सर देखा जाता है we see that जब बच्चे क्लास में मैथ बना रहे होते हैं तो शिक्षक उनको शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वो सबसे गलत स्टेप है। उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए। So group study is most important thing when you are teaching math or the student into the classroom. Then you have to give the permission to discuss themselves, and also because we know that math can be solved in various ways. Suppose one student into the group, he has made a different way to solve the math, and it is easier to the other student also. So we have to try to discuss math and teach the math into the group also. Conceptual understanding doesn't just happen at the whiteboard, because one of our students, I have just put it, change the slide, sir. One of our students has made a project, and definitely I sure if I will ask the question from him this time also, he is able to solve all the things and tell what are the Roman number and what is in Roman number, what is L, what is C, all these things he will able to say. So conceptual understanding doesn't just happen at whiteboard, but it can be achieved by interrupting fun math activity to the lessons, including hand-on practice, collaborative projects, gamified or game-based learning. Repetition and homework are important, but for this lesson are realistic, your student need to find the excitement and wonder it with. We say, whenever the task given to the student, we have to think that the subject will be interesting, for that he is able to solve all the questions. When we give the lots of question of pressure to the student, they having the discourage and also they feel the irritation. They don't want to solve the question, and what will be happen? We regularly see that the student will not able to solve the question, whatever the homework you have given. Getting a student excited about math problem. Creating excitement around math can be uphill battle, but it's one you and your student can win. Next slide. I have, according to math teacher, there are some basic rules into the class. Our math class norms. What are the norms? Help and support other. We have to make ready your student to help and support to the other student, or we can say weak student also. Stay on task and focus when working. जब आप काम कर रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो अपने सब्जेक्ट पे कायम रहिए और उस पे काम करते रहिए। विस्पर एंड यूज मैथ टॉक विथ योर पार्टनर, और अपने जो क्लास में जो बच्चे हैं और जो आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपस में डिस्कस करें, बातें करें, और मैथ के बारे में वो अपने पार्टनर से डिस्कस करके पढ़ाई भी करें। Keep think neat and pick up after yourself. Everyone safe to make a mistake and safe to ask questions. सभी कोई यहाँ पर सुरक्षित है। यदि आप मिस्टेक भी करते हैं तो हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग बनाइए अच्छे से मैथ, और जो भी मिस्टेक होगा उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इवन मैथ पढ़ाते समय हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जब हम कोई क्वेश्चन दे रहे हैं तो एक स्टेप, जो जैसे ही कोई बच्चा को बुलाकर हम मैथ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो एक स्टेप जैसे बच्चा सॉल्व किया उसको वहीं पे रोक के फिर दूसरे बच्चे से नेक्स्ट स्टेप बनवाना चाहिए।
उससे क्या है कि उनका कंसंट्रेशन लेवल, उनका थिंकिंग लेवल डेवलप रहता है। अब वो इस तरह से अलग अलग स्टेप अलग अलग बच्चों से अगर आप बनवाते हैं तो ये आप जान पाएंगे कि सभी बच्चे का ध्यान एक और आकर्षित है। नेक्स्ट स्लाइड। मोस्ट ऑफ द टाइम मैथ इज चैलेंजिंग सब्जेक्ट बोथ टीच एंड टू लर्न। टीचर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैथ ये सब्जेक्ट का ये सवाल मैं कैसे इनको समझाऊं, because sometimes the answer not coming correct, they get confused. Student also confused. So most of the time, student having lots of formula, lots of things to do, so they having challenge to for the math subject. But it also one of the most next slide rewarding. Finding the right mix of fun and learning can bring a lot of excitement to the class. अगर जूनियर लेवल की बात करें तो आप शिक्षक हैं, शिक्षक में आप कुछ खेल खेल में ही कोई भी सवाल भी पूछ सकते हैं या कुछ इस तरह से टास्क दीजिए ताकि बच्चे का ध्यान जो है वह केंद्रित रहे। सपोज कभी कभी क्या है कि हमें बीच पढ़ाई में भी रुककर उनको मनोरंजन करने के लिए सपोज दैट रैंडमली मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, चलो बताओ कौन बताएगा सबसे पहले। सब अलर्ट है। यस, क्विक क्वेश्चन। 77, 78, 69 में कौन पढ़ा? What happened? Most of the student will tell. Some student tells 69. But actually what? The concentration, the thing that some student will say 78. वो क्या है कि आप उनका ध्यान को आकर्षित कर लिए और फिर आप उसको मैथ में फिर उसको इन्वॉल्व। अब हम सिर्फ सवाल को बना रहे हैं, ये वे नहीं है। कुछ एक फन टाइप का, कुछ अलग तरह का पजल्स टाइप का कुछ लेके आवे और जो हमारा रिलेटेड है, जो लेसन प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें कुछ अपना एडिशनल ऐड करें। ऐसा नहीं कि मैथ पढ़ाना है तो मुझे जेसीबी अगर दे दिया गया है या रोड रोलर दे दिया गया है तो उसको रोड रोलर ला के दिखाएंगे तभी वो होगा। आप छोटी छोटी चीजों से उसको बता सकते हैं। Think about what, next slide. Think about what your student already love doing. Video games, Lego. Use this passion to create exciting math lesson plan your student can relate to. Hands-on math practice can engage student that they have disconnect from the math, putting always the pencil and the textbook and moving student out of their day can be re-energize your class. Most of the time, mathematics of life plus laughter into, we can say multiplication of love minus hate, it will equal to happiness. I will tell the one incident when I go for a work of the school outside. One student, his father is a shopkeeper, but he is not present at that time. So the little student having the pen, paper and the book and try to solve the questions. When I stand next to him and I thought that he is doing the wrong way calculation. Then I have asked, whatever the question you are solving, is it correct? He boldly said, yes sir, correct. But I make them understand, have you read Bodmas? He just afraid and said, no sir, I have not read the Bodmas. Then I have tell, he actually he is not understand what is the Bodmas.
then he just afraid and not able to say something. I just try to make him understand, but again he is not understand. Then I just thought a trick and said, you just remember रे को का भाग जो घर. You just remember रे को का भाग जो घर. उसने पूछा सर ये क्या है? तो मैंने बोला कि जब आप कभी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी काम करते हैं तो बोर्ड मास का फॉर्मूला अपनाना होता है, जिसके तहत आप किसी भी प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो मैंने उसे एक क्वेश्चन दिया, अच्छा ये बताओ 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? तो उसने बोला 2, 2 + 2 4 भागा 2. अगेन आई मेक अंडरस्टैंड रे को का भाग जो कर, रे से रेखा, को से कोश, भा से भाग. भा मतलब भाग, पहले आपको डिवाइड करना है. जो रे को का भाग जो, गा से गुना, जो से घर, जो से जोड़ और घा से घर. तब वो समझ गया. अब मैंने उसे पूछा बोलो 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? उसका झट से आंसर जवाब आया 3. अभी भी जब मैं उसके पास जब जाता हूं तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जब उससे पूछता हूं तो वो एक आदर्श से मुझे देखता है और उसके बारे में मतलब फील हो जाता है कि समझ रहा है. तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं. साइन को साइन का जब बात आया था तो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे p/h बोलना है या b/h बोलना है. तो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, आप बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरिहरिपुर. ये क्या है? क्या आप आसानी से उस चीज को पंडित बद्री प्रसाद हरिहरिपुर, पंडित बद्री प्रसाद को ऊपर रख दीजिए. p से पंडित, b से बद्री, p से प्रसाद. साइन का फॉर्मूला हो गया पंडित बद्री प्रसाद जो है तो यही हरिहरि, p/h साइन का फॉर्मूला. कॉस का b/h हरि हरि, और टेन का p/b. पंडित बद्री प्रसाद ऊपर रखेंगे और हरिहरि को नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर. तो इस तरह से हम लोग क्या है काफी आसानी से मैथ को अलग अलग स्ट्रेटेजी लगाकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और ज्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं. We can say practice makes perfect. In other words, we can say practice makes math perfect. जितना आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपका गणित उतना ही बेहतर होते चला जाएगा. नेक्स्ट है always accomplish or reward the student whenever he able to solve the question. You have to reward them. For that, it will energize the student and it is focusing toward the math, and also the attachment of math will be increase their mind. Next slide. Top 9 strategies for engaging lessons, explaining instruction, conceptual understanding, using concept in math vocabularies, cooperative learning strategies, meaningful and frequent homework, puzzle pieces, math instruction, verbalize math problem, reflection time, making math fun fact. इसमें से मैं 2 ही 3 टॉपिक के बारे में बताऊंगा क्योंकि लगभग सारा टॉपिक मैंने अटेंड कर लिया है. एक्सप्लिसिट लर्निंग में क्या है कि आप बच्चों को जिस तरह से मैं बताया कि तोड़ कर सवाल को बनाना, ये इम्पोर्टेंट है. कंसेप्चुअल क्या है कि जब भी आप कभी भी मैथ पढ़ाते हैं, ये जीवन में बिठा लीजिए. कभी भी मैथ पढ़ाते हैं तो पहला क्या है कि जो आप मैथ पढ़ा रहे हैं, चैप्टर शुरू करने के पहले
जो अध्याय के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और सॉल्व एग्जाम्पल है वो जरूर करा दें। अगर वो करा दिए तो आप देखेंगे कि जो एक्सरसाइज बनाने में आप जितना समय लगाते हैं वो आधे समय में उसका रिजल्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बच्चे के पास एक लास्ट लॉन्गर टाइम से उनके पास वो चीज रहेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट हम लोग बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि महंगे चीजों से ही बनाना है। नेक्स्ट स्लाइड। और छोटे छोटे मटेरियल हम लोग यूज करके मैथ्स को उनके कंसेप्ट के अनुसार बता सकते हैं। सपोज दैट मैथ वर्ड प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्लाइड। मैथ वर्ड प्रॉब्लम को रियल लाइफ में हम लोग जोड़ने के लिए बच्चों को बता सकते हैं। सपोज दैट आप इतने स्पीड से इतना डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द टाइम, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द कार, then they will apply the speed and distance time formula, then afterward they are able to solve the questions। तो हम लोग जेन्युइन चीजों को छोटे छोटे तरीके से बच्चों को बता सकते हैं। टायर रखा हुआ है तो टायर का सरकमफ्रेंस कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका डेंसिटी कितना है, ये हम लोग जनरल प्रैक्टिस में भी करा सकते हैं। उनको ईच स्टेप देकर भी चेक कर सकते हैं, भी चेक करवा सकते हैं। जैसे फार्मूला में इसका डायमीटर या रेडियस समथिंग कुछ है तो हम लोग फार्मूला पे बिठाएंगे और उसका कितना पेरीमीटर है, सरकमफ्रेंस कितना है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। और इन स्टेप के जरिए भी हम लोग उसको अगर नापने दें फिजिकली तो वो आंसर जो है दोनों कोलाइड करेगा। तो इस तरह से हम व्यवहारिक जीवन में भी मैथ को पढ़ा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ का वोकैबुलरी। मैथ का वोकैबुलरी होता क्या है एक्चुअली, when we try to solve the problem we just say addition, add, this is not the much vocabulary of the addition। we have to say different types of questions they will ask, find the sum, find the total, all together, perimeter, increase by together, lots of vocabularies, plus, attend, combined more than, added to, ये सभी vocabularies हम लोग को बताना होगा कि ये जोड़ एडिशन का इतने तरह का इतने तरीके से आपको याद रखना है। यदि क्वेश्चन में आप इस तरह से देखते हैं तो आपको ऐड करना है। जैसे सब्ट्रैक्शन में फाइंड द डिफरेंसेस, हाउ मच लेस देन, ये सब जब वोकैबुलरीज आता है तो मुझे डायरेक्टली बच्चे ये समझ जाए कि यहाँ पे हमको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन। सपोज दैट हाउ मच नंबर इट विल ही हैज एक्सीड, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। उनको वोकैबुलरी अगर पता होगा तो जरूर सॉल्व कर लेंगे। सपोज दैट दो स्टूडेंट हैं, one student has scored 480, another student has scored 450, then how much number exceed the first one? Then what happened? Most of the students not able to say the question of answer. Am I right or not? We have to make them understand कि हम लोगों को वोकैबुलरीज को ज्यादा फोकस करना है। कितना टाइम, मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ईच, इन, ऑल, ट्वाइस प्रोडक्ट, एरिया, फैक्टर, मल्टीप्लाई, टोटल, अरेंज, रॉ, कॉलम, इक्वल ग्रुप। डिवीजन में की बात किया जाए, हाफ, सेम, स्प्लिट, क्वार्टेट, डिवीजर, इक्वल ग्रुप्स, ईच सेपरेट, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड, शेयर, इक्वलिटी, ये सारी चीजें हम लोगों को बच्चे को बताना चाहिए। नेक्स्ट, while solving the question we also face these types of in senior level account, attend, add, angle, x, area, arithmetic, lots of things।
वी हैव टू, जिस तरह से हम लोग हिंदी में हार्ड वर्ड और इंग्लिश में हार्ड वर्ड वोकेबुलरीज बच्चे को सिखाते हैं, मैथ्स में भी होना चाहिए। इससे क्या है कि बच्चे उस चीजों को समझ सकेंगे अच्छे से। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, नेक्स्ट स्लाइड। बच्चे को हमेशा क्या है, ग्रुप में सीखने के लिए दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अलग अलग तरह के चीजों को सीख सकें और किसी बच्चे में नया थिंकिंग है या नया क्रिएटिव आइडिया है वो दे सकें। Meaningful and frequent homework. Whatever the homework you are giving to the student, they should be meaningful, and homework should be given to the student in frequent way. And whatever the homework you have given, evaluation will be also in a regular way. Next subject. Next, you know, first. Yeah, most of the time we see that we are just giving complete the exercise and lots of homework given to the student. But what will be happening at the home? The parents are engaged in some different work, and whenever they come to the home, they having some refreshment time, but they are not able to take time for himself. So they started to support the student to their completing the homework. So we have to try to give such type of homework on that the student will become and come with the proper homework, and the parents also able to make help in completing the homework also. Suppose we have to follow win-win situation, जिसमें क्या है कि बच्चे भी सीख जाएं, वो भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, पेरेंट्स भी इस बच्चे को समय दें, वैसा वर्क करना है हमें। नेक्स्ट स्लाइड। We have to give some types of enjoyment work, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोत्साहन, अद्भुत किस्म का कार्य देना चाहिए, कुछ मैथ्स में कुछ ट्रिकी वर्क देना चाहिए, जिससे क्या है कि बच्चे वो करके आए और पेरेंट्स भी उसमें इंटरेस्ट के साथ कार्य करें। Because every age of person learning want to learn something new. When you give some new strategies, new tricks to the student, and when the parents going to be held to their words, they are they take very enjoy and very cooperative to the student also. Some puzzles piece of math also. Suppose that in this number, you can see next slide. Next. In this slide, there is a credit card, and in first credit card or second credit card, which number is missing? We can see first credit card 12, 24, 48, 96, 192. The number formed by two first digit in 12, 24, 48, 96, 192. नीचे के कार्ड में आप देखेंगे 23 का टेबल चल रहा है, 23, 46, 92, 184, 368। तो बच्चे का माइंड इस तरह से पजल्स गेम में इंगेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। यहाँ पे आप जूनियर क्लास के बच्चे को दे सकते हैं पजल्स गेम में। नेक्स्ट स्लाइड। Verbalize math problem. Suppose you have given some types of problem on the board. What will be happen? The whole student try to focus and solve the sum, and they try to solve. What will be happen? Suppose Niranjan sir. Yes sir. What is the answer?
ऐसे करने से क्या होगा, हर बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल उस जगह पे आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, इसका एडिशन करेंगे और 3 से डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा। इसका एडिशन कीजिए 3 से डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा। ये भी आप एडिशन कीजिए और उसको जब लास्ट में करेंगे 9 का डिवाइड करेंगे 3 से एवरेज निकालेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो क्या है कि इस तरह से हम अलग अलग स्ट्रेटेजी लगाएंगे तो बच्चे का ध्यान बटा हुआ रहेगा और उन लोग पढ़ने में ज्यादा मन लगाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर, 2 मिनट। आप बच्चे को इस तरह से स्टिक दे सकते हैं। आप पूछेंगे, आप चेंज एरो डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बाय पिकिंग 3 स्टिक ओनली। आप 3 स्टिक का ही उपयोग करेंगे, 3 ही स्टिक को हटाएंगे और इसका डायरेक्शन बदलेंगे। इज इट पॉसिबल? देखिए तो इट इज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन लेवल। बच्चे का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ नया नया कुछ लेके आ गए और उन्हें बता रहे हैं। उससे क्या होगा कि आप मैथ के क्लास में बच्चे को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहेंगे, जितने हाई लेवल तक ले जाना चाहेंगे, बच्चे आपके साथ चलेंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इस स्टिक को आगे लगा देना है और इसका डायरेक्शन क्या करेंगे, ये वाला स्टिक को उधर लगा देंगे और ये वाला स्टिक को उधर लगा देंगे। तो इसमें से जो बच्चे सॉल्व करके आएंगे, उनका सोचिए, उनका एप्रिसिएशन होगा क्लास में, उनका थिंकिंग लेवल क्या होगा, वो मैथ के प्रति कितना इंटरेस्टेड होंगे, वो शिक्षक के प्रति कितना सहानुभूति रखेंगे कि शिक्षक नई नई चीजें हमें बता रहे हैं। मैथ को वो कभी भी कॉम्प्लिकेट नहीं समझेंगे। And most of the students I have challenged, they will not drop down the subject after completing the matriculation exam. So lots of things. Okay. Next slide. Last. Reflection. Providing time to reflect give the brain a chance to process the work completed. This can be done after both group and individual activity. Group reflection is the one of the most important thing. Next slide, sir. के बाद play games, math games are great classroom activity. Here are a few examples. Design and play a board game, build structures and judge durability. Divide into groups for a quiz or game show. Get kids moving and measure speed or distance jump. I have discussed earlier. Even repetitive tasks can be fun with the right tool. That's why engaging games are a great way to help students build essential math skill. When a student plays prodigy math game, for example, they can learn curriculum aligned math facts without things like worksheet or flashcard. This can help them become excited to play and learn. Next slide, sir. Last slide. So, how teacher can define strategies? Sometimes trying something new can make a huge difference for your student, but do not stress and try to change too much at once. कहने का तात्पर्य है कि आप चेंजेस कीजिए, उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा भी चेंजेस नहीं करना है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज को भी नहीं लगाना है ताकि बच्चे के अंदर स्ट्रेस भी आए। So, in last, I want to conclude my today's session.
So I would like to complete my today's session. यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांत शास्त्रम गणित मधुरदिनं सांस्कृतम. Like the crest of the peacock, like the gem on the head of a snake, so is mathematics at the head of all knowledge. जिस तरह से मोरों के शिखा पर मोरों के सिर पर शिखा होते हैं, नागों के सिर पर मणि होते हैं, सर्वोच्च स्थान पर होते हैं, उसी प्रकार वेदांत शास्त्र में गणित का स्थान सबसे उच्च है. थैंक यू. Definitely, today Neeraj sir elaborated mathematical strategies in our daily life. He briefed how mathematics is related in each and every lifestyle of a man, where a question eventually comes that yes, definitely we are learning mathematics, but where is the implementation of mathematics in our daily life? So the answer for this question was elaborated very beautifully by our resource person, that where are the fields, what are the fields, where we are involving the mathematics in our daily life use. So the session was outstanding. So big round of applause for Neeraj sir for having elaborating the importance of mathematics in our daily life. Thank you. Have a nice day. Thank you.